we completed first concept of this chapter, that is concentration of the ore. In that we learned four different types of a method to concentrate the mineral, to concentrate the ore. In that, in hydraulic washing, the main concept in the hydraulic washing is that density difference between the metals and gangue particles. What is gangue? The impurities present in the mineral or in the ore, like sand, silica, oxygen, sulfide, sulfur particles. This all are the present as the impurities or gangue particles. Then we learned froth flotation. The main thing in that is जितने भी सल्फाइड पार्टिकल्स या जितने भी सल्फाइड ऑर्स आर प्रेजेंट, उन सभी के लिए मेनली फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड टू कंसंट्रेट द ऑर. And another main point in that froth flotation process from which MCQs to be asked. Parameters considered in the froth flotation method: collectors, promoters, stabilizers and depressants. These four parameters are very most important and from which MCQs may be asked. अच्छा MCQ बन सकता है वहाँ से. Then magnetic separation, very easy concept. And in the last, that is leaching process, specially used for silver aurum, silver and aurum. These are most, and third one is a lead. These three elements, if we want to these three elements in a purest form, then via leaching process we continue. These four methods are important as 2 marks. 2 marks question individual, and in the 10th you already learned froth flotation and this all the methods. So now we move on to the, and in a previous lecture we already started the reduction of the ore. Reduction of the ore means it has 2 types. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड और हमारे पास है, उसको हम लोग करेंगे ऑक्साइड के अंदर कन्वर्जन. ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं हम, उसको रिडक्शन प्रोसेस बोला जाता है. एंड अनदर मेथड इज इफ वी हैव ऑक्साइड of any kind of element, then we convert it in a pure metal directly, and also called a reduction method. Then in that reduction we have 3 types. What are the 3? Number 1 is roasting, and that topic also I considered in the previous lecture. Right now we are summarize you that what we learned in the previous lecture. What is the meaning of roasting? The main fundamental point in the roasting is it is carried out in a reverberatory furnace. Reverberatory furnace. If you see in the textbook, maybe in the middle of this chapter, one topic is that is all Heroult process, and in that an example of
a blast furnace, maybe it is given. The same kind, this rubber batteries furnace is there. Same kind, and a different layers have a different temperatures for the reactions. The most important, this carried out in the reverberatory process. Reverberatory process of the process kaya furnace. Second most important thing in the roasting process is considered, that is proceed in the presence of oxygen, because in this process we converting the sulfide ore to oxide ore. So we remove sulfur with oxygen as SO2 gas. If we have any kind of a sulfur ore, in that we wrote that ZNS, for example, ZNS when react with O2 and it gives ZnO oxide, ZnO, and further oxide converted into Zn pure, and by the reduction process, at the conclusion, at the end of the reaction, 90 to 97% pure metal is obtained. So this will also maybe asked in the examination, that how many percentage the pure metal will obtained in by the reduction of this method. A very easy type of a question, but conceptual. If you know the concept behind the topic, then you have to solve the MCQ any. Either it is a physical chemistry MCQ or a inorganic or organic chemistry MCQ. Then in last lecture I also told you all that names of the ores you have to memorize. या फिर रट्टा मार, लेकिन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस लेटिन नेम के ऊपर से अगर एमसीक्यू पूछा जाए, then you have to solve that. So different type of examples we took in the previous lecture about the roasting, and we wrote also a definition of the roasting and all the important points with example we considered in the last lecture. Today we complete this reduction of the ore, and we starting from the self reduction point. And it is also considered in the roasting process. So write down the heading, that is self reduction. As the name says, self reduction. What is the meaning of self reduction? अपने आप reduction हो जाए, reduced by its own, and that process is called self-reduction. So first we write the important points about the self-reduction. The reduction in which species reacts with itself. अपने आप से रिएक्शन कर दे to form a new oxide नहीं लिखो, new species लिखो, ये डिपेंड करता है सिचुएशन एंड रिएक्शन के ऊपर. Species is known as self reduction. SR लिखो, समझ जाओगे. It is known as a self reduction. अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्फ रिडक्शन का एग्जाम्पल लिया जाए, दैट इज कॉपर. हमारे टेक्स्ट बुक में भी ये एक्सप्लेन किया गया. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कॉपर.
कॉपर का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, तो वी हैव Cu2s, Cu2s, cuprous sulfide, and when it reacts with O2, it gives Cu2O plus SO2. First it is converted into SO2 gas. तो ये तो भाई प्रीवियस प्रोसेस ही हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ? आपने तो बोला सर ये सेल्फ रिडक्शन करता है, नहीं करता। दिस ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट्स, अब मैं इस SO2 को ऐसे लिखता हूं माइनस SO2 गैस, ये तो भाई साहब हवा में उड़ जाएंगे। Now further this Cu2O cuprous oxide reacts further with Cu2s, further reacts with the Cu2s and gives a Cu metal plus SO2 gas. By this process we will get 90 to 97% of pure copper. And one most important thing is कि यहाँ पे एक वर्ड जो है वो यूज किया गया है, दैट इज ब्लिस्टर कॉपर। इन टेक्स्ट बुक ऑल्सो दिस वर्ड इज यूज्ड। तो ब्लिस्टर कॉपर का मीनिंग क्या होता है वो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले। ब्लिस्टर कॉपर, कॉपर हैविंग ब्लिस्टर्स। अब ये ब्लिस्टर का मीनिंग क्या है? इट मीन्स लेयर्स ऑफ SO2 gas on its surface मतलब कॉपर surface is called blister copper। समझ में आया होगा आप लोगों को? एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल था ब्लिस्टर कॉपर का। एक और यहाँ पे भाई साहब जो है वो करते हैं सेल्फ रिडक्शन, दैट इज HGS मर्क्यूरी सल्फाइड, और इसको लैटिन नेम दिया गया सिनाबार। सिनेमा के ऊपर से यू मेमोराइज दैट सिनाबार। सेम प्रोसेस, O2 gas, again I write here minus SO2 gas, and it makes a mercury oxide, and further it reacts with the HGS, not HG2S, it gives a pure mercury and SO2 gas. Okay, so if I want to ask this question in 2 marks, then I can explain self reduction of a copper and self reduction of a cuprous sulfide and mercury sulfide. Then I may ask, not have to, I may be asked कि पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। Okay, this is the roasting process. Now we move on to the second हमारा concept जो है, second process जो है वो है calcination process। कैल्सिनेशन प्रोसेस के अंदर C है, तो C के ऊपर से याद रख सकोगे। दूसरी बात, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे। ये प्रोसेस जैसे रोस्टिंग कंसीडर्ड और कैरीड आउट in the rubber evaporative furnace,
This process is also carried out in laboratory furnace। कहीं पे प्रोसेस बोल दो तो फर्नेस समझ ही लेना। laboratory furnace। Second most important thing is it is carried out in the absence of O2, in the absence of air or in the absence of O2। थर्ड पॉइंट मेनली, अब इसमें किसको रिड्यूस करते हैं? मेनली हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, इसको लिया जाता है इन विच H2O remove, in which H2O will remove। And second most important is carbonated salts। अब ये C जो है वो कैल्सिनेशन का C कार्बोनेटेड सॉल्ट्स के लिए मोस्टली यूज होता है। ओके, और इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? मेटल के ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इजी। कार्बोनेट सॉल्ट में क्या रिमूव होगा? CO2 गैस। बहुत इजी। अब इसके अंदर एक फोर्थ पॉइंट और है, वॉलेटाइल impurities are removed and make ore porous। porous का मैंने आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया हुआ है। Move on to the examples। नंबर 1 कार्बोनेट और सोडियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके साथ एक और लेटिन नेम लिखो इसका, कैल्साइट। और क्या बोला जाता है? कैल्साइट। और सिंपली इसको क्या करना है? हिट ही करना है, सिंपली हिट करना है। सिंपली हिट करोगे आप लोग यहाँ से क्या मिल जाता है? CaO प्लस CO2 गैस। डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द और एट द टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। थोड़ा सा टेम्परेचर लेके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग लिखो ZnCO3 का। ZnCO3 हिट करेंगे। ZnCO3 का नेम होगा कैलेमाइन, कैलामाइन। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें क्या बनेगा? ZnO प्लस CO2 गैस। ओके, फिर FeCO3 ले सकते हो यहाँ पे, लिखो एग्जाम्पल यहाँ पे FeCO3, इसका नाम है सीडेराइड। लिखी क्या बनाएगा? FeO प्लस CO2। तो ऐसे आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो। ओके, अब लेते हैं हम लोग हाइड्रेटेड का एग्जाम्पल। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, वाटर मॉलिक्यूल। तो उसका एग्जाम्पल Al2O3 into XH2O। क्या नाम दिया जाता है इसे? एल्यूमिना। ये कन्वर्ट होता है Al2O3 प्लस H2O के अंदर। यहाँ पे डेल्टा लिखना भूल गए तो आप मत कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट CaCO3 into MgCO3, इस मिक्सचर को बोला जाता है डोलामाइट। डोलामाइट को हिट करोगे आप लोग क्या मिलेगा? दो ऑक्साइड मिलते हैं, CaO प्लस Mg
second important topic of the reduction. थर्ड के ऊपर आ जाते हैं, आज का लास्ट। अब आप लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा होगा, स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग प्रोसेस कहाँ पे? रेवर्बरेटरी, रेवर्बरेटरी। फिर सेकंड कहाँ पे? इन द प्रेजेंस ऑफ O2 होता है ये रिएक्शन। ओके, इन द प्रोसेस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ ए O2। जस्ट अ मिनट, दिख रहा है आप लोगों को थोड़ा बहुत वो नीचे। इन नेक्स्ट टाइम वी चेंज द बोर्ड क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। ओके, थोड़ा बहुत आज एडजस्टमेंट कर लो। चलो, अब ये किसके लिए यूज होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, फॉर कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड to metal, specially used for the metal oxide to metal using reducing agent। अब यहाँ पे ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, reducing agent like carbon monoxide, then CO2, okay, and aluminum is most important। okay, चलो एग्जाम्पल ले, ZnO, इसका नाम दिया जाता है जिंसाइड। हाँ, क्या रखना पड़ेगा? जिंसाइड। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन क्या देगा? Zn प्योर देगा, एंड CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। देन SnO2, टिन स्टोन बोला जाता है इसे, टिन स्टोन। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन क्या देगा? Sn प्योर प्लस CO2 गैस। अब इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है, इट इज यूज्ड फॉर द एल्यूमिनियम, इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। हमारे टेक्स्ट बुक में भी है ये पॉइंट, एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। क्या होगा? एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर से लिख सकते हो। मेटल ऑक्साइड और रिडक्शन विद एल्यूमिनियम गिव्स मेटल। ओके, एंड दिस एक्सट्रैक्शन इज मोस्टली यूज्ड फॉर क्रोमियम, Fe, Mn, सिलिकॉन। चलिए एग्जांपल, Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम क्या देगा? Cr सॉलिड एंड Al2O3 ऑक्साइड। ओके, सेम Fe2O3 के साथ रिएक्शन Al का, तो ये क्या देगा? Fe सॉलिड प्लस Al2O3। ओके, ऐसे सभी का Mn3O4 प्लस Al gives Mn solid plus Al2O3। so this is our second concept over roasting, calcination and this smelting process we completed here. In next lecture we do refining। अब ये 90 to 97% मिला, तो उसमें से 100% 99.99 कैसे लेके जाएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू एंड वेरी मच।